Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss vacuoles. So let's move to the lightboard. So dear students, vacuoles. Another single membrane bonded organelle. So these are the fluid filled single membrane bounded organelles found in plants, animals, protozoans, fungi, etc. So single membrane bonded organelles, which are usually they have fluid in them, so that is why they are called as fluid filled membranous organelles. बेसिकली अगर हम इसको की वर्ड में अगर एक ही वर्ड में इसको बयान करना चाहें, सो बेसिकली दे आर द स्टोरेज ऑर्गेनल्स, दे आर स्टोरेज ऑर्गेनल्स। जिस तरह कि हमने लाइजोसोम्स को बताया कि वो सुइसाइडल बैग्स हैं, जिस तरह से आगे चल के हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर द पावर हाउस। जिस तरह से हमने गोल्जी ऑपरेटर्स का पढ़ा था, दे आर कंसर्न विद द सेल सेक्रेशंस। इस तरह से वैक्यूल्स बेसिकली दे आर द स्टोरेज ऑर्गेनल्स। क्लियर? सो इन प्लांट्स vacuoles coils or fuse to form large central vacuole which pushes the other organelles to the thin peripheral layer. So that's why because of large central vacuole, एक तो बहुत बड़ा होता है, दूसरे नंबर पर सेंट्रल होता है, the nucleus especially is pushed away from the center of the cell. Clear? In plants. तो प्लांट्स में हम बात करते होते हैं न्यूक्लियस की, आगे चलकर न्यूक्लियस को डिस्कस भी करेंगे। सो न्यूक्लियस बेसिकली एनिमल्स में यूजुअली सेंट्रल होता है, जबकि प्लांट्स में इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर होता है। तो उसकी रीज़न क्या होती है? बिकॉज के प्लांट्स में छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं, दे क्वाइल्स और दे यूनाइट और दे फ्यूज टू फॉर्म लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिसकी वजह से जो बाकी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, दे आर पुश्ड टुवर्ड्स द
थिन लेयर, द पेरिफेरल लेयर, ठीक है, जो साइडों पे होती है। इसी तरह से आगे चल के बात करते हैं रिगार्डिंग द एनिमल्स। As far as animals are concerned, the animals possess large number of, not large, but large number of small vacuoles. Clear? And they do not coils to form the large vacuole, large central vacuole. So that is the reason in animal cells the nucleus is centralized, while in the plants it is away from the center. That is the basic difference between the nuclear position. In plants, the vacuole increases the size of cell without diluting the cytoplasm contents. और आमतौर पर प्लांट सेल्स में ये वाटर को ही स्टोर करता है, ठीक है। इन प्लांट्स सेल द vacuoles are used to store water. उससे क्या होता है? In order to maintain the turgidity और टर्गर, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा टर्गर प्रेशर, ठीक है, जो वैक्यूल के अंदर पानी जमा हो जाने की वजह से इट पुट्स प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन पुट्स pressure on the cell wall being rigid, it opposes the increase and in the size. So due to that very reason, the plant cell becomes turgid, and this very condition is known as turgor, and the pressure is termed as turgor pressure. So in order to maintain the turgidity or turgor in the soft parts of plants, like the leaves and the young shoots. इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर ये अपना प्रेशर जो है वो बनाकर और मुख्तलिफ तरह की जो फंक्शन है परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स के वाले से कोई चीज़ इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में, एंड सपोर्टेड मूवमेंट इन प्लांट्स। Vacuoles are also involved in plant movements. अब प्लांट मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि प्लांट एक जगह से चल के दूसरी जगह चला जाए, दैट इज नॉट। मूवमेंट का मतलब उसके पार्ट्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, द टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट्स in which vacuoles are involved are turgor movements.
are turgor movements, which are the type of autonomic movements. एक्चुअली इसमें होता क्या है कि in the pulvinus, the swollen part of the petiole, उसे हम pulvinus कहते हैं. Let's suppose कि this is a leaf, और ये जिस स्टॉक के साथ अटैच होता है दैट इज कॉल्ड एज पेटियोल, और पेटियोल ये आगे अटैच होती है. लेट्स सपोज दिस इज द स्टेम. तो जहाँ पर इसकी स्टेम होती है वहाँ पर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा स्वोलन होता है. दिस वन, दैट इज एक्चुअली द पोलोवेरस. और इसमें खास बात क्या होती है, द पोलोवेनस have special parenchyma cells. और आपने डियर स्टूडेंट्स ये प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा कि parenchyma cells के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं. They have special parenchyma cells which have large vacuoles in order to create turgor pressure leading to turgor movements. For example, sleep movements and rapid movement of leaflets. आपने कभी छुई मुई का पौधा सुना नाम उसका, छुई मुई, टच मी नॉट, चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस करेंगे. ये कंपाउंड लीफ होता है, इसमें से छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं. ये कंपाउंड लीफ है, सादा लीफ नहीं है. इस तरह छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं. दीज आर द लीफलेट्स. और इनके पास भी अब पोलोवेनस मौजूद है. ठीक है, जिस तरह से इस प्लांट के पास भी से ये सिंपल लीफ है, इसके पास भी पोलोवेनस मौजूद है. तो इसको जैसे ही टच करें, किसी भी चीज़ से टच करें, इमीडिएटली क्या होता है कि इसके जो लीफलेट्स होते हैं दे आर क्लोज्ड विद इन अ सेकेंड और टू दे गेट क्लोज्ड. सो ये कहलाती है रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट्स. टच किया, 1 से 2 सेकंड के अंदर ये सारे लीव्स ऐसे एकदम से क्लोज हो जाते हैं. सो किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर पोलोवेनस के ऊपर इनका सडनली जो टर्गर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये मूव कर ऐसी तरह से क्लोज हो जाते हैं. इसी तरह से इनके अंदर भी जो स्लीप मूवमेंट्स हैं, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं रात के वक्त उनके पत्ते ऐसे नीचे को झुक जाते हैं. ठीक है, ये इस तरह से नीचे को झुक जाएगा. मॉर्निंग टाइम पे क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है और दे बिकम हॉरिजॉन्टल. तो ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल, तो इट्स लुक्स लाइक द प्लांट हैज स्लेप्ट एंड नाउ द प्लांट इज अवेकन. ठीक है, सो दीज आर द सर्टन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द वैक्यूल्स. इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल्स हैं वो सेकेंड ईयर में भी डिस्कस होंगी. सो यहाँ पर वैक्यूल के हवाले से डिटेल्ड लेक्चर में देना चाह रहा था. सो ताकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके मतलब कि हमारे जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से रिलेटेड ना हो. सो दैट इज़ दीज आर द थिंग्स विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेकेंड ईयर. सो यहाँ पर इसके कंप्लीट टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हो सकती हैं हम वैक्यूल से रिलेटेड उसको डिस्कस कर सकें. ठीक, तो प्लांट्स के अंदर स्पेशली ये इस तरह से मौजूद है. और डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो टर्गर प्रेशर मेंटेन होता है, यहाँ पर एक आगे टर्म आएगी, दैट इज टोनोप्लास्ट. आपने पहले भी इसका नाम सुन रखा है, टोनोप्लास्ट. इट्स अ स्पेशल membrane around
the vacuole in plants. और ये किस तरह से टर्गर प्रेशर स्टूडेंट्स मेंटेन करती है, इसकी वैक्यूल की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं मौजूद स्पेशलाइज्ड चैनल्स जो आयंस होते हैं उनकी मूवमेंट को वो रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जब वो आयंस अंदर आएंगे उसको ऑस्मोसिस के जरिए वाटर फॉलो करता हुआ उनके अंदर वैक्यूल के अंदर आएगा, तो इस तरह से उनके अंदर वैक्यूल का साइज इंक्रीज करता चला जाएगा, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर. सो इट्स अ स्पेशल मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इन द प्लांट्स, द टोनोप्लास्ट. इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स. तो ये बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सा कलेक्टिव लेक्चर मैंने इसके ऊपर आपको दे रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड हमारी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो टर्म्स हैं वो उनको इकट्ठा किया जा सके वैक्यूल से रिलेटेड. ठीक है. सो अगर हम वैक्यूल्स की टाइप्स की बात करें तो मेजर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स. There are major 4 types of vacuoles. इनमें से कुछ का नाम तो आपने सुन रखा होगा और एक आध आपके लिए नया होगा. Like number 1 the sap vacuole. sap किसे कहते हैं dear students? पढ़ा हुआ आपने. Sap basically it is the fluid present within the vacuole. sap किसे कहते हैं? The fluid within the vacuole is called sap. It's sap. वो food हो सकता है, वो salts हो सकते हैं, everything, anything, ions हो सकते हैं. तो sap vacuole basically the vacuole containing sap is called sap vacuole, especially found in plants. Clear? Number 2 are the contractile vacuoles. ये भी हमारे सिलेबस के अंदर है. ठीक है. Contractile vacuole we will learn in chapter number 7 प्रोटोजोन्स में, और प्रोटोजोन्स में हम पढ़ेंगे सिलिएट्स के अंदर. ठीक है. So the certain protozoans किसे कहते हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को. स्पेशली द सिलिएट्स कहते हैं द प्रोटोजोन्स विच मूव बाय सिलिया. ठीक है. इसमें पढ़ेंगे जैसे पैरामीशियम वगैरह इसमें शामिल है. सो स्पेशली सिलिएट्स पोजेस contractile vacuole that functions for maintaining osmoregulation. क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं ये वाले प्रोटोजोन्स, तो मुसलसल पानी इनकी बॉडी के अंदर आ रहा है. तो लाइक दिस इज अ पैरामीशियम covered with number of cilia. These are cilia. There is macronucleus and micronucleus and gullet. And now this one is the contractile vacuole. तो वाटर जैसे ही इसकी बॉडी में एंटर होता रहता है तो उसके ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एंटर होता रहेगा, और जैसे ही इसकी कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगी तो ये वैक्यूल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नाउ द एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड. ठीक है.
excess water is removed. This is termed as osmoregulation. So this is basically the contractile vacuole, this one. इसी तरह से एक और वैक्यूल है जो हम इसी चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं जी स्टूडेंट्स, किसी को जहन में आया, याद आया? दैट इज फूड वैक्यूल। क्लियर? तो फूड जैसे ही जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारी सेल के अंदर आते हैं, तो उसमें एक वो फोल्डिंग बनती है, तो उसके ज़रिए मेम्ब्रेन को लेकर आते हैं हमारे सेल के अंदर, ऐसे नहीं आ जाते। सो दैट इज़ द फूड वैक्यूल। द वैक्यूल containing food and the enzymes, the lysosomal enzymes. Clear? जिसको हम आमतौर पर सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं. So that is basically present in animals usually. वैसे तो बाकियों में होता है, लेकिन हम यहाँ पर एनिमल्स के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे हैं. और एक चौथा होता है वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज गैस वैक्यूल. गैस वैक्यूल या इसको कहते हैं सूडो वैक्यूल. सूडो वैक्यूल ये वाहिद ऐसा वैक्यूल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ठीक है, और ये मौजूद है इन द प्रोकैरियोट्स. इट इज present in cyanobacteria and is not bounded by membrane, means कि membraneless है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, तो कि फिर किससे बना हुआ है? It is made up of proteins only. तो प्रोटीन से मिलकर जस्ट बनता है, ठीक है. और यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन buoyancy, मीन्स कि उसकी लोकोमोशन. तो साइनोबैक्टीरिया को पानी के अंदर ग्लाइड करने में, उसको मूव करने में ये हेल्प करता है. बॉयल्सी कहते हैं अपथ्रस्ट को, ठीक है. तो यहाँ पर डिफरेंट गैसेस रिलीज की जाती हैं और उसमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेंज करके और उसकी मदद से मूव किया जाता है. तो याद रखिएगा जो गैस वैक्यूल है आमतौर पर ये बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बॉडीड है, इसी वजह से इसको सूडो वैक्यूल हम कहते हैं. सो दीज आर द 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वैक्यूल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.